CMA 64. CMA 64. 4 of 20. As far back as 6th of January. 2024, ठीक. Shall we keep it before us? Yes, yes. Got it. Ji. So I'm mindful of the fact that, I don't want to retrace what has already been traveled upon. I'll just make 3 very brief points. ठीक. The way I've structured my concise statement, if your lordships will be kind enough to consider just glancing at paragraph 12, which is at page 4, it reproduces the question which was recorded in the order of 21st of April 2011. Page 4. Which paragraph? Paragraph 12. Paragraph 12. What is this document? In my concise statement, आपका paragraph जी 12. मेरे paragraph 12 में मैंने वो सवाल reproduce किया है. Yes. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. If it does not, its effects and consequences. Now, is this a question of law or fact? This is a question of law. And in fact, even the amicus, Mr. Makhdoom Ali Khan Sahab, had said that his arguments were also focused on this question. Ji. And this question is directed by the President seeking an opinion from this court in relation to a decision which has become final and binding. There is no doubt about that. नहीं, ये क्वेश्चन रेफरेंस में तो नहीं है. Sir, reference में है. कहाँ है? If your lordship sees the ये तो order, कोर्ट ने उस वक्त बनाए जब सब्सिक्वेंटली ये बने. क्वेश्चन देखिए रेफरेंस में कहाँ पे है, पढ़िए. if your lordship sees the order of 20, आपसे ये नहीं, आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस में ये कहाँ जिक्र है? कहाँ है ये? वहाँ तो ओरिजिनल रेफरेंस में नहीं है सर. हाँ तो देखिए लेकिन ना, उसके- 186 पढ़िए. सर उसके बाद अगर आप सिर्फ इजाजत दें. नहीं, हम आप जरा सवाल सुन जी लें. सर. आपकी बात ठीक है, जी. ऑर्डर आया, लेकिन आप लॉ पढ़े. लॉ में तो प्रेसिडेंट जो पूछेगा वो हम देंगे ना. क्या हम अपने क्वेश्चन को रीड्राफ्ट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं नंबर 1. कर सकते और ये जो कैसे कर सकते हैं? How do you say that? सर 21/4 का जो ऑर्डर है वो कहता है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन फॉरवर्डेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द रेफरेंस Yes, they be forwarded by the president, बाय द प्रेसिडेंट, not by the court suo motu. not by the court suo motu. So that is what I'm trying to point out, कि this question is part of the reference, चलें आगे बढ़ें. not the original Come on, reference, but okay, we can spend a whole day debating that. Yes. What is the point you want to make? the point that I wish to make now in relation to this, in my concise statement, the way I've structured it, I have referred, my lordships, to the role of the complainant, which was also alluded to by my... चलें आप अपना. Ji sir, in paragraph If you keep saying it was alluded paragraph to. 25, जी. page 8 से लेके page 9, paragraph 30 तक. This is in relation to the role of the complainant Yes. after filing of the FIR and before the trial commenced. What was his role and what was his stand in relation to the accused. Where do you want to read from? If I may read paragraph 27. Yes. Yet, in less than 2 years of lodging the FIR in April 1976, Mr. Kasuri rejoined the PPP. He continued to remain a member of and attended the meetings of Tehreek-e-Fikr-e-Qaid-e-Awam, an organization meant for propagating the political philosophy of Mr. Bhutto until April 1977. Mr. Ahmed Raza Kasuri even applied for the PPP ticket to contest the general elections of 1977 but was denied.
Mr. Kasuri's letter to Zulfikar Ali Bhutto dated 8/6/1976 is particularly revealing. Where When he is this writes, letter? My lord, this has been referred to at page 540 of PLD 1979 Supreme Court, the Supreme Court judgment. It has been referred to it. I'm reproducing it from there. ठीक. I take this opportunity to express my deep gratitude for nominating me as member of the Pakistan delegation that participated in this year's spring season of Interparliamentary Union held at Mexico City, Mexico, and goes on to claim, we found that your image as a scholar statesman is emerging and getting wide acceptance. In another letter of 30 January 1977, Reference? again at page 541 of the same judgment. Earlier, I have requested over half a dozen times to your MS for an interview with you, but to this date, I have not received any reply from him. I wonder whether Major General Imtiaz Ali ever made it known to you. I am taking this liberty to write to you and to request you personally to grant me an interview at your earliest convenience. I have to discuss many matters which concern the party and government. He ends the letter with the hope, I trust this letter finds you and Begum Bhutto in best of health, happiness and prosperity. Yet, the same person, months later, when martial law is proclaimed, becomes PW1. My lord, next in my concise statement... What's the point you want to make? The point that I wish to make is, if your lordship looks at the trial and looks at the conduct of the parties, the believability factor, that is this a person who could have been believed as PW1 when his stand in relation to the main accused is reflected in his own correspondence, in his own conduct. How did the Supreme Court attend to these letters? My lord, Supreme Court, these letters were referred to in the minority opinion of... No, in the majority opinion. My lord, majority opinion में तो इसका तस्करा नहीं है. अच्छा, but, okay. Minority Only mention in minority Yes. opinion. इतना बता दीजिए कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में ये लेटर आए हैं, जी हाँ, एग्जिबिट है. एग्जिबिटेड है बस. जी, एग्जिबिट नंबर्स दिए हुए हैं. एग्जिबिट 119/D is the first one and the other one is exhibit PW3/16D. ये PLD कौन सी? Citation क्या? लाहौर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट. 1979 Supreme Court 53. जी सर. ये दोनों ने डिफेंस ने भी एग्जिबिट करवाए, जी दूसरा वाला, और प्रोसिक्यूशन ने भी इसकी पहला वाला एक्सप्लेनेशन डिफेंस वो देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन वो जरूर देते हैं कि ये तो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू समहाउ प्रोटेक्ट माई सेल्फ, प्रोटेक्ट माय which again does not go into with the character of the person that he himself put him out to be as someone who would never compromise on principles. It just does not match up. My lord, then what I have done is, the important peg of this reference is the interviews of Justice Naseem Hassan Shah Sahab. There's an interview in... minority opinion. What do they say? That if we can complete the story, the minority opinion refers to these letters and says what? It goes, I think it says exactly this, that... What do they say, the judges? सर, इस वजह से तो उन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन टर्न नहीं करता, वो तो टर्न करता है ऑन द लीगल क्वेश्चन ऑफ corroboration पे. No, what did they say? That these letters show that he couldn't have been a target. What do the minority opinion say? They quoted these letters. What do they express then? It alludes to the fact that this cannot be the conduct and character of a person who was earlier waxing eloquent about a person who now he's accusing of murder. Is it pertaining to the conduct of the complainant or the conduct of the accused? Or Conduct both? of the complainant. Okay, that's the point I wanted to ask you. Cheek, move ahead. In relation to Justice Naseem Hassan Shah Sahab's interview, I've reproduced again 3 quotations in paragraph 33
I will not read those. And also the quotations from his books, Memoirs and Reflections, that is in paragraph 34. Again, I will not read those because they've already been read. There is one quote which is very important. And it sort of matches with one of the many queries that were raised, that this case cannot be divorced from the context in relation to the environment it was conducted in. It was martial law. And Justice Naseem Hasan Shah Sahab is also very aware of this. And he writes, if I may take your lordships to paragraph 34, Roman E. Page 13 of the concise statement. He writes, this is on page 33 of his book, I observed from the bench that martial law is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless. But once this occupation is over, it is our duty to mete out justice. I felt this one quote encapsulates the mindset of Justice Naseem Hasan Shah. When he himself recognizes... It is just his mindset, or is it, would you say, depicts reality? It of course depicts reality, but it is, since he was on the bench, since... Let's talk about this case. You see, this is a general statement made by a judge. Where is the correlation between the statement and the case which is before us now? So this particular quote was made in relation to Haji Saifullah's case after General Ziaul Haq had passed away, died, and Prime Minister Junejo's government... So we are to presume that this is a general statement for all cases which were decided? This is what he says. This is what he says in relation to his own mindset as to when he sat on the bench, how did he view the courts. He says, I'm not putting in any words. These are his words. It is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless. But once that occupation is over, it is our duty to mete out justice. All cases decided during martial law are where judges are helpless. Because one of the questions raised was that why did Justice Naseem Hasan Shah in 2002 make these revelations? He says in his in the introduction paragraph of this book. Got it. आगे बढ़े. इसको अगर बिलीव कर दें तो फिर मार्शल लॉ के दौर में जितने फैसले हुए सबको ओपन करेंगे? नहीं. Presidential reference नहीं है. One presidential reference, and two, because he himself says he has made specific admissions. तो खुल जाएगा ना यार, फ्लड गेट तो खुल जाएगा. अल्टीमेटली तो आप देखें ना, कोई भी आ सकता है. अब्दुल वली खान का केस था और बहुत सारे केस थे, सियासी केस सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे उन दौरों में, तो वो सारे अगर खुलना शुरू हो गए, अभी लेटेस्ट भी एक केस अभी पिछले दिनों में भी हुआ है, अगर वो भी खुलना शुरू होगा फिर क्या क्या होगा? सर अगर आप देखें डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब जस्टिस ने सिर्फ इस केस के बुनियाद पे उन्होंने स्पेसिफिक basically you're saying these observations have been made not about all cases, and if any other judge makes an observation about some other case, then maybe that could be opened up. Indeed. It doesn't mean that all cases are to be opened up. Indeed. No, but how do you say that this is made about this case? I say that if you see the earlier admissions that he makes, one, about that he was an ad hoc judge, he himself felt that he would not be included in the bench. Two, that Justice Mushtaq Hussain came and met him with the Attorney General, trying to convince him to sit on the bench, which he himself says that this was not proper, this was improper to do. His revelations in relation to the trial itself, I'm saying look at those revelations and look at this statement. This statement simply explains how he has made those revelations. I'm just drawing the connection between them. My Lord, the second point that I wish to make
is that in relation to presidential reference number 2 of 2022, in relation to the Rekodik case, again, the Maulvi Abdul Haq Baloch case judgment had attained finality. The presidential reference came, and I will only refer, if I may, to a paragraph from the additional What was the note. question of law in Rekodik? My lord, the question of law in Rekodik and that Rekodik judgment is that whether in light of that judgment could the government enter into these agreements. And these agreements were being entered into this time without any public auction. This judgment is not reported, but it was included in the booklet filed by Mr. Makhdoom Ali Khan, volume 1A. इसका उसका सिर्फ एक पैराग्राफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के additional note का मैं पढ़ना चाहूँगा, if your lordship allows me. This is at page 509 of this bundle, volume 1. It's not reported yet. It's not reported. जी I think वो आपको निकाल के दिया हुआ है 1A, volume 1A. Volume कौन से? Volume 1A. जी ठीक है, पढ़िए. जी. बढ़िया. Paragraph 12. The judicial intrusion of this court in the Maulvi Abdul Haq Baloch case, with all the humility at my command and with utmost respect to my learned brothers, when viewed in retrospect, appears to be a rushed decision where there was no live issue left for determination. The very issuance of a mining license, which was the subject matter of the petition before the court, had already been cancelled by the appropriate licensing authority. In fact, time has proved that the financial exposure for such a judicial intrusion far exceeded the benefits it aimed to achieve and the financial losses it purportedly claimed to save. All I'm saying is, adopt the same legal reasoning and in retrospect make a determination in relation to these judgments, the judgment of the Lahore High Court and the judgment of the Supreme Court, to come to the conclusion that that trial in retrospect was nothing but an intentional and premeditated conviction of guilt of a former Prime Minister. Why do you use the word former? Of a Prime Minister of this country, elected Prime Minister of this country. If you use the word former. I use the word former because, I mean, he's no longer there. He was a Prime Minister. His term had At ended. that time he was Prime Minister. At that time he was Prime Minister, yes indeed. So that legal reasoning should be followed. Last, I will just conclude by just one. There's this apprehension that the opinion of this court in its advisory jurisdiction should not damage the finality principle. Yes. How to avoid that? Lord Atkin had said this as far back as 1933. He said, finality is a good thing, but justice is better. That's all, my lord. Thank you for being to the point. Grateful, sir. Short and sweet. Is anyone else who will be short? We'll take them first and we'll take the longer people later. If anyone can be precise. एक साहब ये वीडियो दिखाना है और कोई नहीं. नाइक साहब आप आइए. वो आपने कर दिया है नाइक साहब को वो जो रिकॉर्डिंग दिखाना चाह रहे थे. You want us to hear this first? जफर साहब कर ठीक है ठीक है ठीक है चलने दें. We let it run? जी सर. Okay. कोई आ जाता है कि जनाब मार्शला गैर कानूनी है, उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन को तोड़ दिया है, लिहाजा आप मार्शला को गैर कानूनी करार दें और
उन्होंने जो कार्रवाई की है उसकी उन्हें सजा दी। जज साहिबान बैठे हैं ऊपर मार्शल लॉ वाले ऊपर बंदूक के लेके खड़े हैं, तो फिर जज साहिबान क्या करें, आप ये कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में मेरी तो हकीकत पे मबनी है कि लोगों का तो ख्याल है ना रिलीजियस को पैरोने करानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी रेत और लाहौर कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया है। मगर वो मिलिट्री वाले उन जजों को निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल कुछ करते नहीं, जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो वो कोई भी कोर्ट या कोई भी अदालत अपने सर इसकी ट्रांसक्रिप्ट हम देख लेंगे। ट्रांसक्रिप्ट देख लें, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लें। Why should we hear see him? इसकी ट्रांसक्रिप्ट वो पढ़ लें। Sir, who read the transcript? I don't have time to read it. They will read it. No, I want to see the body language. Body language में देखना होगा। क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और सरकारें के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह पे कोई ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने हमें दी है? जी हाँ, जी दी हुई है जी। CM 59 थोड़ा सी नसीब खाली है मगर यानी अपनी सीट से केस में मौजूद थे। आपसे मेरी पूछा गया जाए कि क्या पाकिस्तान की अदालत की तारीख में ऐसी कोई मिसाल है कि महज मशवरे की बुनियाद पर किसी को फांसी दी गई? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा तो नहीं था, उसमें तो वो था कि उनका ऑर्डर था कि वो यानी अपने यानी सबॉर्डिनेट्स को केस को खत्म कर दिया जाए। तो लिहाजा मशवरे की और बात होती है, ऑर्डर की और बात। सर ये जो जब मैं अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको बतौर जज क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा ना कि क्या आप देते हैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, आपके सामने पेश हूँ, मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बैठा दिया गया, मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये किस पेज पे जी इसकी ट्रांसक्रिप्ट? सर एक मिनट, पेज 7 सर जी ये जियो न्यूज ने अलग से दी थी, ये दे दी जी जी 58 है जी। इसकी आप वो जो ये जो इनके ट्रांसक्रिप्ट है वो बता दें कौन सा? ओके सर, ये जियो हमने नहीं दी थी, ये जियो न्यूज ने से आपने मंगवाई थी तो जियो न्यूज ने दी हुई है। ये जो है ना वीडियो जियो न्यूज से जियो न्यूज ने पेज है वो फाइल हमें दिखा दें। ये आपने फिर क्या फाइल की है? हमने जो दूसरी फाइल की थी वो पहले हमने सुना दी थी, तो चीफ साहब ने कहा था कि जियो की मंगा के जियो की सुनी जाए। उनके इंटरव्यू वो कर देते हैं, वो करके आपको दे देते हैं सर। किस पेज पे? सजा में कमी के बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक साहब, जैसा जब आप कन्विंस थे, जब आप फैसला दे रहे थे तो डिसेंडिंग नोट ही आपको लिखना चाहिए था, केस हद तक सजा ना दी जाए। जी हाँ, वो तो सकता था, मगर जब वो जो उनका वकील है वो कहना मुझे सजा की कोई परवाह नहीं, मुझे तो टोटल चाहिए। मैं समझता हूँ भुट्टो यानी जो है वो आप डिसेंडिंग नोट दे सकते थे ना, दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी। उसने हमें एक किस्म का नाराज कर दिया। लेकिन सर आप लोग तस्वीर करते हैं कि इस पे which is the point? आप हमें ट्रांसक्रिप्ट देख के बता दें जो जो रेलेवेंट है। No need to go through the whole thing. We will go through it on our own. But he is not saying that he convicted wrongly.
Where does he say that? So he basically he's saying that he's not saying where is that portion where he's saying? no, he's saying right now. ये जरा ट्रांसक्रिप्ट ले लें आप, हमें बता दें जो आप हमसे जो कराना है. Where is that point, if at all there is this point? एक तो जनरल बात हो रही है ना, जनरल माहौल है, fine. Okay, now does he at any stage say that this was a wrong conviction? सर जो जजमेंट आई देखे ना ट्रांसक्रिप्ट से बता दें, इस तरह वो Does he कह रहे say हैं, this or he let's be doesn't say? सर precise ये about it. जियो की वो है ना, जियो की वीडियो है ये आप ये आपने लें, हम आपको देते हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट इसमें दे से रहे हैं बता ना, दें. मार्क कर ठीक देना Because you हमें. wanted it played, and I just wanted to know that does he actually say that, because he's saying कि वो आपको रिक्यूज कर देना चाहिए था, वो पूछ रहे हैं ना कमेंट जो who's interviewing him, and he's giving a general opinion about the state of martial law. But does he act, and he's saying that Yahya Bakhtiar should have argued this point. He's But even- where is he saying, he's even- but that was only on punishment, punishment, not on yeah. conviction. Where is he, does he at all say that the conviction, I did it contrary to what I've No, it doesn't say. agreed with or whatever? बड़े नजर है. वो बात कहीं कहते हैं या नहीं कहते हैं? हाँ या ना बताए ना हमें. ये है ट्रांसक्रिप्ट जो जियो न्यूज ने दी है, इसमें आप हमें वो ऐसी कोई बात है या नहीं है? ऐसी बात नहीं है कोई, मगर उसने बेसिकली ये कहा कि इट वाज अ केस ऑफ अ लेसर पनिशमेंट. हाँ वो बात तो उन्होंने कह दी. That is what उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, हो सकता था उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, चलें वो तो ठीक है, फाइन. It's a case of lesser punishment and not of death. but This is what he's saying in the. But he doesn't say कि conviction नहीं होना चाहिए. But see, if it is not a case of death, तो वो जो सारी 4-3 है वो मैं समझ गया. दिस इज द बेस क्या कहते हैं, दिस इज द बेस कि 4-3 खत्म हो जाता है. No, 4-3 पता नहीं, वो फिर एक अलग बात होगी. That he says- I may decide a case, but later I may think it was wrong. I can say that it should be less. आप दिखाएं कि कहाँ पे उन्होंने कहा that it was extraneous pressures and influences which convinced me to pass that order. सर इसमें जो और टेप्स हैं उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी. If you lordship allow me to hear the other tapes also. Please, आपके सामने आप ट्रांसक्रिप्ट में हमें बता दें, पहले पढ़ लें, फिर हम देखेंगे ना. नहीं सर, there are other videos also of other persons कि जो कि जक्स्टा पोजीशन में आपको देखनी पड़ेगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स हिम. जी. सो आप इनका दिखाएं कि इनके कौन से आप ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, आप वो देखें, उसमें हमें बताएं कौन सा है. जब उसमें आप कर लेंगे देन वी विल गो टू समथिंग. यू कांट जंप टू समथिंग व्हिच इज वो तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना. आप पहले इनका बताएं, बी वेरी क्लियर. जी. That is there any statement made by this gentleman saying that there was extraneous influences other than judicial which convinced me to pass an order In this case. सर in few words he has said that कि मार्शल लॉ था. Please आप पढ़ लें, पढ़ देना उसमें से आप जो आप समझते हैं वो पढ़ लें आप. ये क्लिप सर, नंबर 4 है जो इफ्तिखार अहमद जो भी चल रहा सर, इफ्तिखार अहमद का क्वेश्चन है सर, आपने एक दफा ये भी कहा कि फौजी आमरों के दौर में अवाम ने अदालतों को बेबस देखा और उनके दिलों से अदलिया का एहतराम जाता रहा. जस्टिस नसीम हसन शाह, जी हाँ, ये अभी कुछ हद तक दुरुस्त है कि फौज जब आती है तो ये कहती है कि जिन बातों में हम फैसला करते हैं उसमें अदालत को दायरा इख्तियार से बात बाहर होगी और इस मामले में नहीं दखल दे सकते, तो लिहाजा उसका बहुत मनफी असर होता है. इफ्तिखार अहमद सर, ये फौजी हुकूमतों के अलावा सियासी हुकूमतें ऐसा नहीं करती. जस्टिस नसीम हसन शाह, जी नहीं, सियासी हुकूमतें करें तो उनकी बात कोई नहीं मानता है. ये जो सच्ची बात है कि क्योंकि आखिर जुडिशरी जो है वो उनके ताबे तो नहीं है, ना इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट. तो अगर अव्वल तो इफ्तिखार अहमद तो जर्नलों के ताबे है. जस्टिस नसीम हसन शाह, हाँ ताबे है, क्योंकि वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जर्नल जो होते हैं वो पीसीओ कर दें, कुछ कर दें, और क्योंकि जुडिशरी में सबसे अहम बात है कि उनकी मुलाजमतें हैं. इफ्तिखार अहमद सर, ये जो भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो का हिस्टोरिकल केस है उसमें जर्नल असर अंदाज हुए थे. जस्टिस नसीम हसन शाह, नहीं, मेरा नहीं ख्याल असर अंदाज, हमें तो किसी ने नहीं कहा इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो. हो सकता है चीफ जस्टिस साहब से बात करते हो और थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है. मैं 26 यानी this is the statement Yes. that he
does not admit that there was any instructions or any influence by those people to him for a particular decision. पर ये कहता है थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते सर नोबडी इफ योर लॉर्डशिप वुड अप्रिशिएट सेंटेंस फिर से पढ़ें. जी मैं फिर से पढ़ता हूँ नहीं सर नहीं हमें तो किसी ने नहीं कहा कि इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो. हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब से वो बात करते हो और वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो और वो हमें वो हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है. तो सर यू हैव गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस. सेकंड वर्ड है वो चीफ जस्टिस है. No judge would admit क्या कहते हैं he was influenced by sitting as a judge. I don't know whether somebody would be or not be. That's we don't want to go into the realm of conjecture. We are just going to take what it is said. But this is what the reality is, my lord. No. We got the point. We'll see it if we require it ourselves. But we don't want to take up valuable court time because I just wanted to know if he actually says this. He says a lot of things but doesn't categorically say that. The only thing he talks about is the lesser sentence. But that doesn't erase the conviction. That doesn't. Your lordship is right over there. But that we can't do anything about in any case. But that creates a doubt. आगे हाँ चलिए अब फिर आप आगे नेक्स्ट पॉइंट बताएं. सर नेक्स्ट एक वीडियो और देख लें. नहीं बता देना. बता दें. आप पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें. बात ये जी आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बताएं कि जी देखें ये बोला है फिर हम देखें ना कि मेरा जो व्यू है फ्रॉम रीडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट which transcript is जो वीडियो देखा है वीडियो जो हमने देखा है नहीं इन्हीं की वीडियो है नेक्स्ट. जी जरा नेक्स्ट भी देख लेना. देन वी विल आप पढ़ देना पहले. सर मैं आपको पढ़नी जो मेरा कंक्लूजन है वो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा. पॉइंट तो बता देना. सर पॉइंट यही है कि ही वाज बीइंग मैनूवर्ड. Justice Naseem Hassan Shah was being maneuvered by Justice Mushtaq Hussain and Sharifuddin Pirzada Sahab, Attorney General of Pakistan. कह चुके हैं वो हमने कल वो सारी बातें सुन ली थी. इसी के ऊपर वीडियो है जो क्लैरिटी देता है. क्या कहते हैं मजीद. सर वो वीडियो देखिए. आप जरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें जो आप वीडियो हमें दिखाना चाहते हैं. ये आपका CM 59 हमारे सामने जी 59 के अंदर. असल पहले ट्रांसक्रिप्ट दिखा दें. उसमें अगर कोई बात हो तो जरूर देखेंगे. पहले ट्रांसक्रिप्ट आपने सर मैं बताऊं ना वो जो कई वीडियोस हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपके पास. ट्रांसक्रिप्ट नहीं है. आपने फाइल करा हुआ है जी नहीं सर कई वीडियोस ऐसे हैं कि उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है. अगर आप जरा वीडियोस देख लें तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी. दैट विल सेव द टाइम. क्या कहते हैं. I think that if you are only worried about the time will be saved if you just tell us. इसे उसका ट्रांसक्रिप्ट इधर नहीं है ना हमारे. आधे घंटे का वीडियो देखें. आधा घंटे 10 मिनट है सर. 2 मिनट के वीडियोस हैं. इतने में तो आपने वीडियोस देख लिए थे. आपने देखे नहीं है. मैंने देखी इसलिए तो why don't you just tell us the point. We got this point now. We want to know the next point. सर नेक्स्ट पॉइंट इज वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ. नहीं आप बताएं तो सही ना कहते क्या है. क्या कहा तो बताएं ना. सर वो जो पेज कौन सा है आप बताइए ना. पेज ये आपका CM हमारे पास है. इसमें कौन सा पेज है. पेज 60 एक CMA 58 और 24 भी है. उसके अंदर 59 में आप बता रहे हैं ना. ये तो जी हाँ जी CMA 59 है ना. ये पेज 66 देख लीजिए. पेज 66 जी इस CMA में 59 ये उसकी किताब है. क्या कहते हैं ये फाइल कौन सा पेज है. पेज 66 जी. सवाल आखिर लास्ट क्वेश्चन सर. जी पढ़े. लेकिन जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे. क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी. फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज़ किए थे. डॉक्टर नसीम हसन शाह. मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की. कुछ वाक़यात भी रूनुमा हुए. अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था.
मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाइल के साथ भुट्टो साहब के एतराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी से बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरखास्त करने के लिए जज मेरे केस की समाअत ना करे। सवाल, जनरल जिया के जजों से ताल्लुकात थे। सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो हॉटलाइन भी थी। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मुझे हाई कोर्ट के मुतालिक इल्म नहीं, जाती ताल्लुक तो होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो से नाराज थे, क्योंकि 8वें नंबर के एक जज को चीफ जज बना दिया गया था। हालांकि मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को राह किया था। मौलवी मुश्ताक ने बड़ी दलेरी के साथ उसकी दरखास्त को समाअत करवाई, यहाँ तक कि भुट्टो ने कहा मुझे इत्तला मिली है कि मेरे जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगा। मौलवी मुश्ताक के ख्याल में उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, हालांकि वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बड़ी ताकत से जनरल जिया और मौलवी मुश्ताक का ताल्लुक ये था कि दोनों भुट्टो से खौफजादा थे। अगर ये आ गया तो एक जाएगा और दूसरे से भुट्टो पूछेगा बेटा मेरे साथ तो तुमने ये किया था, अब तैयार हो जाओ। ये मुश्ताक के बारे में ये उनकी राय है। जी 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 सर, what does it mean? दिस इज व्हाट इज एक्सप्रेसिंग, क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट इज You एक्सप्रेसिंग। may have an opinion, I may have an जी opinion. जी so जी what? जी 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 सर। अबाउट मौलवी मुश्ताक, ये पेज 66 वाला सवाल अगर दोबारा से पढ़ लें आप, जी जरूर सर, जरूर जरूर। जस्टिस मुश्ताक के बारे में। जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने इतराज़ात किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की कि कुछ वाक़यात से भी रोनुमा हुए। अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाल के साथ भुट्टो के तराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुल्जिम अपनी मर्जी का बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर ये अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए ये जज मेरे केस की समाअत ना करें। This is in fact relating to Maulvi Mushtaq and Anwarul Haq. अनवारुल हक सर, अनवारुल हक, जी जी जी। There is no वो मटेरियल बताया ना, where he says I was pressure in deciding this इनका matter. अपना कोई admission बस है, ये pressure का। relevant है ना हमारे लिए। बाकियों की तो स्टोरी नहीं है चाहिए। सर ये अगर आप, ये किताब है रफ़ी रज़ा साहब की, ऑन पेज 73। Page 73. किताबें तो पढ़ी हैं। पेज 75 पे मेरी सेट की किताबें किसने दो? Yes, Communist. मेमोइर्स और वो नसीम से शाह साहब की मेमोइर्स और दूसरी आई नहीं शायद। पेज 75, ये कहीं है किसी बुकलेट? जी इसी सीएम के अंदर, ये जो भी आप सीएम देख लीजिए, सीएम पेज 75 सर। नहीं ये बहुत नहीं। पेज 75 पे थर्ड पैरा से मैं पढ़ूंगा क्लियरली। There was considered. Mr. Naik, sorry to interrupt you, but a presidential reference number 1 of 2011 was sent to us. Now, that is reported in 2011 as CMR 962. The questions of the presidential reference are there. Now, we can keep reading this book and that book and that book, but we have to focus on the presidential reference and the questions that have been formulated. So, first tell us where are you, what you want to say arises from which particular question that we have to render an opinion on under Article 1. And can I just add to that question? Can you first tell us which is the question of law? Yes, I'll do that. पहले वो पढ़ देना क्या question of law? Sir, now I'll address your lordship before we even hear the videos. I will address your lordship on 2 points. points. Hear the video. First of all, you tell us. Yes. Read this presidential question. And then we will read it. There are 2 main points on which I will argue out before your lordship. This question of presidential Please reference. आप articulate कर दें हमें. 186 says the president will send a question of law.
Not question of fact, please. उसी पर मैं आता Please हूँ. tell us what is the question of law. मैं इजाजत हो तो मैं आप कुछ बताएं. सर मैं इजाजत हो तो मैं बोलूँ ना क्या कहते हैं. You see, there are 2 points on which I will dilate. One is the maintainability, this is the question of law, and second is the legitimacy and the credibility of the trial. These are the 2 points on which I will address your lordship. Number 1 is the maintainability, as my Lord Justice Mansoor Shah has pointed out. Let us read Article 186 first of all. In a while that we read that. 186. Sir. It's on my mind. ये 21/4/2000 का है ना, ये खुला हुआ है सामने, यही है. फारूक साहब, on a lighter note, कभी कभी हम पिटिशन डिसमिस कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं, तो हम दूसरी साइड से पूछते हैं, डू यू वांट टू हेल्प द काउंसिल? जी नहीं सर. बस ये बस on a lighter note. बिल्कुल सर. So let us read 186. Sir. If at any time the President consider it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Now there are 2 things into as far as this article is concerned. Now President has to decide that वो तो उन्होंने कर दिया, भेज भी दिए सवाल. जी हाँ. अब आ जाता है what is the question of law. Question of law has not been defined anywhere in the Constitution. The Constitution is totally silent. It is what is the construction of question of law. I think we can figure it out. I mean, this is such going on for years. But the Do phrase that on the question text of side law, and everywhere. the phrase question of law has been used at 5 places in the Constitution. The phrase question of law. You think Article you think 185. it's a mystery? No, sir, in Article 185, it is written, the words which have been used in Article 185 is substantial question of law. Then in Article 180. That's fine. But what is the question of law in this case? इसमें तो नहीं लिख के दे दिया ना ये. नहीं वो पढ़ मैं चाहता हूँ आप बताएं ना हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा है जिसको हमने आंसर करना है. ये लिखे हुए आप पहले सर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके अंदर जो है नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ. I want him to answer. जी आप पढ़ दें precisely which is the question of law that the president sent, because we can't change it. President must have decided that public importance का ये सवाल. This is president's prerogative. Right. That he decides that this is a question of public importance. We can't go changing that question because the president's discretion. He has thought about it. He says it's of public importance. The court cannot change and modify and change the question. So having said that, which is the question? The question, why don't you pick up पढ़ देना कोई question 2011 CMR दे देना इनको, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? उसमें लिखे हुए सारे. See, first of all, I would submit the words any question of law has to be given the widest interpretation. No, we are with you. President has all the power, authority to send it. वो questions पढ़ लें, ये आपके लिए आसान होगा. This is 2021 CMR. भाई ऐसे भी सवाल भेजते हैं कि secret ballot, does it mean secret ballot? 11. अबे ये भी कभी-कभी 2011. किसी ने कहा तो अंग्रेजी का सवाल है, तो law का नहीं है. ये पढ़ लें आप. ये question ये जो क्या कहते हैं 2011 SCMR 962 के अंदर, let's read from page 963. उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ किए गए हैं, whether the president has or Pakistan has forwarded. Actually, come to the point that number paragraph 1 पढ़े ना. Yeah, 1. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4, sub-articles 1 and 2A, Article 8, Article 9 and Article 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if it does not, its effects and consequences. नहीं, अब आप ये बताइए कि ये question of law है. नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा. I will not answer the question. Let the president answer the question. Fair enough. Fair enough. Why we debate this? This is for us to consider. If we don't consider the question of it is law, for us, before we assume jurisdiction in the matter, we need to know what the question of law is. This is actually a question of fact. Please look at the judgment and tell us whether at all it is violative of articles fla fla fla. This is a question of fact. I'll go visit the judgment and then say, oh, this is wrong, this is wrong, this is right. The question of fact is a different thing altogether. No. So please tell us, because before we assume The question of law, my lord, question of law.
नाइक साहब, जी 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 जब हम आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 8 की, आर्टिकल 10A की बात करते हैं, लेट्स टेक ड्यू प्रोसेस. Question of law and fact are both in it. You can't separate one from the other. डेफिनेटली सर. So it's a question of fact. I can say it's a question. I can make it into a question of law. I can leave it into a question of fact. That's for us or not. It this चीजें, what is due process? ये due process तो कहीं defined तो नहीं है ना. What's a fair trial? Article 10 fair trial. We don't know what a fair trial. मैं बताता हूँ क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे होना था. क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होना था, whether can a trial or can a murder trial be decided when a judge is biased? This is a question of law. So one would answer, no, you cannot. This is a question of law. You can tell a question of law when there is a question of law, because you just have to think about it and answer. You're not supposed. This is equally a question of fact. Fair enough. Everybody has a right to speak. So I'm saying that you have a question of law. There's a difference between the two. Question of law must be answered by looking at it, by not investigating into the matter, by not carrying out an inquiry, by not going into the facts of the case. Question of law has to be answered as a question of law. Question of law could be, as I said earlier, could the trial be, can a trial be concluded or had to be correct if there was bias of the judges? Could there be any trial where the judges are under pressure? General question. आप तो कह रहे हैं फैक्चुअल बताएं हमें सारी चीज़. फैक्ट्स में तो मैं नहीं जा रहा सर. मेरी आप देखें. नहीं नायक साहब एक चीज जरा देख लीजिए. मिस्टर नायक एक चीज देखिएगा, ये पेज 963 के ऊपर जब ये शुरू हो रहा है ना ऑर्डर आपका, जी जी, तो ये बेंच ने जो लिखा है यही झगड़ा है इस वक्त, क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तो ये आप पढ़ें, टुडे आई 21 April 2011 जी, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन फॉरवर्डेड, नॉट फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ लॉ हैव बीन फॉरवर्डेड. ये खुद बेंच ने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, लॉ तो लिखा ही नहीं आगे. ये तो वैसी फैक्चुअल है. ये following question has been forwarded, not question of Mr. Amir Rahman, maybe you make a note because maybe you have to respond. Amir Rahman sir, if he can wake up for a while. अगर नायक साहब आप आर्टिकल 4 पढ़ लें. Amir Rahman साहब अगर उठ जाए तो नायक साहब sorry to get you out of slumber. Sir, इसमें अगर देखें that the question we will asking you also because president को represent करेंगे. May I draw your lord's attention? What's the question of PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट जरा हम देख लें. जरा दीजिएगा. अगर आप इस केस के तनाजुर में नायक साहब जरा अगर आप आर्टिकल 4 अगर आप सर अगर नहीं एक मिनट आर्टिकल 4 पढ़ ले, इसके ओपनिंग वर्ड्स देखें ए में. सर मैं आपको एक PLD जिसका जो आंसर है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, जरा उसको देख लें, पेज 563. I would like to read that. What is a question of law? इसका मीनिंग पता चलेगा if we will read PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, पेज 563. दीजिए. The relevant is at page 569. प्रेसिडेंट की क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आप रिफ्रेश कर लेते हैं ना रेफरेंसेस के लिए. प्रेसिडेंट की पेज 569 पर आ जाइएगा सर. जी पढ़ें. Thus, many questions of law, 1, that involves interpretation of the law, rules, instructions, notifications, or governmental policies. 2, that has not been finally settled by the Supreme Court or is not free from difficulty or ambiguity or calls for discussion of alternative views. 4, that highlights a state of uncertainty in the law arising from a contradictory precedent or that points out blatant abuse of due process may pass for a substantial question of law of public importance. This is where this court has given the meaning to the word question of law. अभी तक जितने भी आर्टिकल 212 में तो और वर्ड ऐड हो जाता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो इधर तो मैं सर्च कर रहा हूँ, इधर है एनी, इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ. रेफरेंस में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मगर ये 212 का रेफरेंस आप दे रहे हैं पैराग्राफ 7 में जो जजमेंट आप कोट. सर मतलब तो वही हो जाएगा. एनी जो लफ्ज है, it is more liberal than the word substantial. No, any would say that you can have multiple questions of law, but does not mean any के उससे आप question of fact बना दे. Question of देखें any का मतलब है multiple पूछे, 6 पूछ ले president. Question of law, yes. No problem on that, but that doesn't mean that any gives a license to go into question of fact. After hearing the videos जो अभी हमने सुने भी नहीं है, videos तो बाद में आएंगे ना, पहले आप सवाल तो बताएं. Sir, ambiguity has been created, uncertainty
has been created in the judgment. Please And try as a to- consequence Naik sir, thereof, ek it has become a question of law. Naik sir, एक second. जी, I जी, mean, जी. one is all for fixing miscarriage of justice. जी. There is no dispute about that. There could be different ways of doing it. We are examining whether at all this miscarriage of justice, if at all there is, could be fixed under 186. That's the precise question. It could be fixed through legislation. It could be fixed through some other curative review concept. If there is any in India, they did it. They did it. So they did a curative review. They said, okay, this has to be seen. That there might be options. There could be legislation. Parliament बना ले law के judgments को revisit किया जाए, कोई अगर गड़बड़ हो जाए. हमें सिर्फ देखना है कि 186 की jurisdiction में हमें दरवाजा खोल सकते हैं कि नहीं. ये मत समझिए कि miscarriage of justice के against में. Of course we should fix our errors and we've no shame in fixing it. But तरीका तो बताए ना. आइन कह रहा है question of law बताए. हमने पहले देखना है question of law क्या है, फिर फैसला कर देंगे. अभी तक नहीं पता चल रहा question of law क्या. Problem ये है. नायक साहब, अगर आप देखें ना आर्टिकल 4 पे अगर आ जाए, आर्टिकल 4 में नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लाइफ लिबर्टी Except through process of law. जी, जी. अब ये जजमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनली अटेंड कर चुकी है, दिस इज बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स एंड एवरी पर्सन. अब अगर इस जजमेंट को आप फॉलो करेंगे जिसमें बगैर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की एग्जीक्यूशन हुई है डेथ सेंटेंस, क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? नंबर 1. नंबर 2 ये कि जो हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाया, क्या उसने इन कैपेसिटी ऑफ हाई कोर्ट चलाया या इन कैपेसिटी ऑफ सेशन कोर्ट चलाया? उसमें अपील का राइट भी गुजारा है. तो ये अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो कल को किसी का केस भी चला जाए कोर्ट में, किसी की भी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी विदाउट कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, देते जाएंगे सेंटेंस. दिस इज नॉट लॉ पॉइंट for other people to come, उनके लिए. The question आएगा कि whether the Article 4 को नजर में रखते हुए whether the Supreme Court and the High Court had rightly interpreted Section 120 of the Pakistan Penal Code regarding conspiracy. That's very important, sir. If there is no conspiracy, the whole case falls. भाई प्रेसिडेंट साहब ये भेज देना सवाल, फिर देख लेंगे. सर अब आपके पास आ गया है ना कि 120 देखिए ना, सेक्शन 120 जो है, that has become very relevant of the Pakistan Penal Code. Where was the agreement? वो खुद कहता है कि there was no agreement. See, if there was no agreement, there cannot be a conspiracy. I think, Mr. Naik, what Justice Jamal is saying, you didn't pick up, that can we leave such a, I mean, however the president has framed the question, who had sent it, who was the law minister or counsel? Your friend, Mr. Babar Awan. Dr. Babar Awan, sir. Where is he? He's disappeared. But anyways. He's joined another party, sir, now. So the question, basically my lord has observed that if, I mean, we understood the substance of the matter, the language used by the president, how appropriate or inappropriate it is, may not reflect it, but we've understood it. Do we want this as a precedent? For instance, can the High Court bypass the confirmation process? Can investigation once closed be reopened? Can transfer application be taken up without consent? Because whilst hearing this matter, a number of other questions have been arisen. So this is a judgment by 7 judges. At the moment, the answer to everything will be yes. Sir, You can rely upon an approval. You can approve. It has, ना वो तो छोड़ दी ना judgment 4 or 3 वो judgment है ना, तो approval is okay. What is the standard of approval? That has not been discussed. So I think the substance of the matter has been placed before us. Now we can see the language, whether we can redraft it for, maybe that was the intent, but maybe it was not gone into the kind of detail which Mr. Manzoor Malik has taken us into. Maybe the record was not available, but we've understood what the president wants. Do you want this as a precedent on the law books? That's all, to be followed by, because otherwise it's a judgment 189, it's binding on all courts. Yes, tomorrow the high courts will continue holding trials, murder trials, will not do confirmation of sentence if they convict. So these are, I think, we need to address him, whether we do it in this jurisdiction, whether we overrule it like we did the Sanaullah Baloch case. But I think
I mean, exactly what the president is, I won't put too much weight on his particular language that has been used, but the intent of the language is there. And I think a lot of water has also flown on the bridge, because this court has taken cognizance of the matter. कि शुरू में कहते थे कि आप प्लीज रीड्राफ्ट करके भेजो, अब हम टेल एंड पे जरा मुश्किल हो जाता है ना, अब जैसे इश्यूज भी रीड्राफ्ट हो सकते हैं कोर्ट्स में, so why can't we redraft a question of if we don't change the substance of what the president wants? Do you have any objection with that? Sir, we don't mind. What we want is the vindication in the history, number one. This should not be treated as, this judgment should not be treated as a precedent at all. We understand that. If you look at the substance, if we've understood the whole thing, it is that this was a mistrial. Mistrial, यही है ना? बिल्कुल. So आप हमसे opinion ले रहे हैं कि ये mistrial है. ये It's a question factual question. ये जो आप कह रहे हैं ना binding precedent. Sir, ये factual, it's not a factual inquiry. How is this a legal? It is, after looking into the material, your lordship will come to the conclusion that it is a mistrial. It's a factual exercise. It's not an inquiry. Inquiry is, sir, with due respect, inquiry is something else. It is just looking into the material which is already on the record. Already on the record, on the basis of that. Factual और क्या होता है? आपने देखना है सारा evidence और देखना है कि सही decide हुआ था कि नहीं. Let me come to your rescue. Let me come to your rescue. I think we can look at this reference in another perspective. That we don't go into the merits of the case. We don't go into the sections, but we look at the events which were taking in the periphery, whether they meet whether justice has been met or not, whether Article 4 was met, whether due process was complied with when the trial was taking place. And these are events which have come to light because of certain statements made by a certain member of the bench. So we don't go into section 336 or section 120A. We don't go into that. We look at the situation which prevailed at that time and whether the process was in accord with law or not. Sir, आप देखें, as it has been argued upon, FIR was registered on the. Let's break some new ground. नहीं सर, मैं खाली बता, थोड़ी सी इजाजत हो. In November 74 the FIR was registered. अगर आप चाहते हैं 6 साल चलाएंगे. नहीं सर आप थोड़ी सी. सर मैं FIR का मैं आपको एक. सर आप इजाजत होते हैं 2 मिनट के लिए. सितंबर 75 के अंदर केस फाइल हो जाता है इंटरेस्ट. 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगता है. ये हमें पता है. अच्छा, जब मार्शल लॉ लगता है तो उसका जो लॉ कंटिन्यूएंस ऑर्डर है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं. ये भी हमें पता है. ठीक. अब कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है. ओथ ऑफ जजेस को भी चेंज कर दिया जाता है. जो सेगमेंट था विद रिगार्ड टू द दिस इज वेयर द लेजिटिमेसी, जो मैं आर्टिकल 4 की बात कर रहे थे. You are repeating what has been said. We want you to say something new. आप क्या कहते हैं, ये सब कुछ खाली इस केस के लिए चेंज किया गया है? नहीं सर, ये पूरे मुल्क के लिए किया गया है. नहीं सर, because basically the whole General Zia-ul-Haq was orchestrating and controlling the entire proceedings of the trial. मुश्ताक साहब को, जस्टिस मुश्ताक को एक्टिंग चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया in violation of Article 216 of the Constitution. ये बातें तो सदर ने की नहीं है ना. सदर हम आपको केस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप और स्ट्रीम पे जा रहे हैं. Sir, all these things, the legitimacy of the trial effect हो रहा है. The person who is heading the trial has become the chief election commissioner. आप अगर पैराग्राफ 17, 18 और 19 पढ़ ले रेफरेंस का जी, तो प्रेसिडेंट ने किसी हद तक अटेम्प्ट की है जी, तो वो एक लीगल लॉ पॉइंट क्रिएट कर सकते. पढ़े जरा उसका रेफरेंस, मेन रेफरेंस का, और 25 पैराग्राफ भी. My Lord, it seems that subsequently it was supplemented with the questions of 5 questions of law, this reference. And I have with me, I as President of the Islamic Republic of Pakistan consider it desirable
to obtain the opinion of the Supreme Court of Pakistan on the following question of law relatable to the reference, the question being referred here in below be treated as part of the reference. Subsequently, whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan, ये वाले जो reported है, my lord, this was sent by the President, signed by Mr. Asif तो Ali. उसमें पहले वाले मर्ज कर लिए ना उन्होंने, फाइनल अब ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ, पिछले वाले भी हैं, पिछले वालों से बात अब ये फाइनल, ये जैसे सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह मादा, ये पहले रेफरेंस में था। आप कोई नई बात करेंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कोई भी हमें नई असिस्टेंस मिली अभी तक, क्योंकि इस्लामिक प्रोविजंस की हम बात तो बड़े करते हैं मगर कोई हमारी मावनत नहीं करेगा। भाई बार बार कह रहा हूँ भाई क्या वो जी अमेरिकन फैसला, ये फैसला, भी कुछ हमारी भी बहुत रिच हिस्ट्री है, उसका कोई हवाला दे दें, कोई नहीं दे रहा है। भाई इस्लाम में अप्रूवल की एविडेंस होती है, कोई हवाला नहीं दे रहा है। कि उसने मुझे कहा कत्ल कर दो तो मैंने कर दिया, अब उसको बख्श दिया जाए, दूसरे को सजा हो जाए, ये है इस्लाम में गुंजाइश इस बात की या नहीं, इसका भी हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो जो नए सवाल जो हमने आपसे पहले दिन से पूछ रहे हैं उसमें तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। मतलब बात तो करता है हर कोई इस्लाम की, मगर जब हम एक्चुअली केस उठाते हैं इस्लाम का, फिर कोई नहीं आता है हमारी मुआवनत करने के लिए। ये आप 2 पढ़ें जी, तो पहला आ गया ना 2, और सारे पढ़ लेते हैं जो उनने भेजे, जो क्वेश्चंस भेजे सप्लीमेंट्री जी। बात किसने करना? Is the last one. Is there anybody else? Whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. ये तो क्लियर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया ना। जी जी सही, हाँ सही फैसला है, बस ठीक है, खत्म, नहीं गलत फैसला है जी। तो कम से कम मुआवनत हो जाएगी हाई कोर्ट की, दूसरे सेशन जजेस की, कि उनको पता होगा यार इस जजमेंट को हमने नहीं रिफर करना है, क्या करना है। अब इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई फैक्चुअल बातें जरूरत नहीं है, मगर to form a opinion of law you sometimes have to go into the facts. This is what I'm saying. पहले दिन कोई शख्स आए और वो सेशन जज बगैर ट्रायल के आई कन्विक्ट यू ऑफ मर्डर, भाई फिर आपको देखना होगा नहीं ये कन्विक्शन यहाँ तक जिसकी गवाही नहीं दी, उसको 342 का बयान करने का स्टेटमेंट नहीं दिया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी टू लीड डिफेंस एविडेंस, तो फिर इट विल कम टू दोज लीगल क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स द इनिशियल क्वेश्चन में बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट इट ओपन्स योर डोर टू क्वेश्चंस ऑफ लॉ एज वेल एज factual. What are the facts? There's no question of fact. We shouldn't say question of fact. We should just say facts. It's a question of law. So factual, khatam. नहीं दी गई, legal consequences. So totality will be seen, and what is the result? I think maybe this is how I think about it. Your Lordship is right. This is what I've been submitting. The material and record has to be seen. Inquiry has not to be, and no inquiry need to be मैं conducted. अपना सब्स्टिट्यूट फाइंडिंग नहीं करना चाहता हूँ हाई कोर्ट की, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब ये इसीलिए पहले दिन भी मंजूर, इट इज समथिंग सो ट्रबलिंग टू द कॉन्शियंस. मे बी आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली. वुड इट चेंज द रिजल्ट? That's the test. It is so unconscionable. I think we have a very high bar to jump over. Yes, and once it is so unconscionable, then you lead to Article 4, Article 10A, the other Article 8. All those things come into the picture. वो जो बाकी चीजें, what is a fair trial? हमें ये आपने opportunity नहीं दी. सबसे बड़ी बात, जैसे जस्टिस मलिक ने पॉइंट आउट किया कि ट्रांसफर हो गया केस एंड नो नोटिस वाज गिवन टू द अक्यूज्ड. सो सी दिस इज व्हाट आई एम सबमिटिंग. आप कह रहे हैं कि आप पे मुझे भरोसा नहीं है जी जी, एंड वजूहात दे रहे हैं, वो एक दिन में हो जाता है. ये सारी बातें एक ये भी mix ले सकते हैं. मे बी वन लैप्स ऑन इट्स ओन मे नॉट बी सफिशिएंट, बट व्हेन टेकन टुगेदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट यही है कि देयर इज अ कंप्लीट, क्या कहते हैं, वायलेशन ऑफ लॉ इन द ट्रायल दैट टुक प्लेस. देयर वाज, ये बातें तो हो गई हैं, आप हमें कोई नई बात बता. सर सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं खाली इसी पर, क्या कहते हैं, कन्फाइन करना चाहता हूं कि फैक्चुअल इंक्वायरी नहीं कर रहे. पाबंदी लगाऊंगा. जी जी, अच्छा. अगर आपने बाहर जाके ये कहा कि 10 साल से केस का फैसला नहीं हुआ, तो फिर ये साथ साथ ये भी कह दीजिए कसूरवार हम नहीं आप हैं.
सर मैं तो ये प्रेस से वैसे ही भागता हूँ। ये बुरा ना माने। ये अगर आप ये देखें ना, ये आगे आप सेकंड जी तीसरा पढ़ें। तीसरा पढ़ते हैं। Whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. See, all the arguments which have taken place till date before your lordships, I don't want to repeat, goes to show the answer has to be in positive, not negative. And the material has to be looked into, and no inquiry needs to be done. Whether the decision in the case of the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirement of Islamic laws as codified in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance, specifically mentioned in the following surahs of Holy Quran. See, it's a question. Repentance is tawbah. Repentance बाद वाली बात है, पहले वाली बात है fulfillment. Fulfillment. ठीक है जी। तो देखिए, अब या तो आप कहें कि those are not applicable. If Islamic provisions are not applicable, then why should we follow UK precedents? I think Islamic provisions are more applicable than any. Definitely, so definitely. There is a rich tradition of Islamic jurisprudence. So repentance is probably referring to maybe Justice Naseem Hassan Shah's interview. I don't know, because it's not clear what is meant by it. अगला भी पढ़ लें, 50 पढ़ लेते हैं सर. Whether on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. ये मटेरियल की बात आ गई ना, फिर टोटल फैक्ट टोटल फैक्ट ये हम नहीं करेंगे सर. मटेरियल को पहले दो में कवर हो जाए सर. मटेरियल को तो देखना पड़ेगा ना. दो चीजें नजर से देखेंगे ना. मैं ये नहीं कहता हूँ कि फैक्चुअल इंक्वायरी, मैं खाली रिक्वेस्ट करूंगा मटेरियल टू बी लुक्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन. वी ऑलरेडी डन सो. 2 दिन हमने सुना है. दिस इज व्हाट आवर सबमिशन इज. ये बताएं आपके ख्याल में और आपके क्या व्यूज हैं इस पे, कि अगर एक डिसीजन ऑलरेडी बायस पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, क्या हम अभी उस पे दोबारा से बैठ के अपना व्यू दें? सर कर सकते हैं आप, क्यों नहीं. अब देखिए ना, आपने 187 में कंप्लीट जस्टिस करनी है. वो चीजें जो कि नहीं उनने कंसिडर की हो, हम उस पे कर लें, चले ठीक है. और जो उन्होंने गलत भी की हैं, ग्लेयरिंगली गलत है सर, ग्लेयरिंगली गलत है. थोड़ा सुन. जी. दोनों साइड्स को देखना है. हमने एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की हो गई है और वो एक्सिक्यूट भी हो गई है, हमने उसे भी जहन में रखना है. और फ्रेश चीजें आई हैं जिसकी वजह, नहीं तो फिर आप हर केस को इसी तरह, हर केस में हमारा एक व्यू होगा, हमारे बाद दूसरे आएंगे, उनका दूसरा व्यू होगा. सो ये चीज मेरे ख्याल में थोड़ी सी देखनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज हो जो कि उस जजमेंट में ना एड्रेस की गई हो और आप हमारे सामने ला रहे हैं. हम बिल्कुल, आप बताएं कि जी ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आई दोनों में, तो प्लीज आप देखें ये मटेरियल आ गया है, इस पे आपका क्या व्यू ओपिनियन है? मेरे ख्याल में दो चीजें इसमें है. सर देखिए, नसीम हसन शाह खुद कहता है कि ज्यादती हुई है. उनको छोड़ देना. देखिए ना, ओवरऑल पिक्चर अब आपने देखनी है. जिस तरह ये ट्रायल हुआ, मैं नहीं समझता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ट्रायल इस तरह हुआ हो. जी स्टे फोकस. ठीक, मैं जस्टिस याया का जवाब है. सियासी बात में चले जा रहे हैं, अब फोकस है इस पे, खत्म करें, आगे बढ़ते हैं. देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक बात ये है कि एक तो वो जो डेथ पेनल्टी को कंफर्मेशन नहीं हुई हाई कोर्ट से, जो कि 374 की खुल्लम खिलाफ वर्जी. बिल्कुल. दूसरी बात ये है, हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की वजह से अपील का राइट, जो कि फंडामेंटल राइट है, प्रिंसिपल राइट, वो डिप्राइव. ये आज तक किसी ने बात नहीं की जो माय लॉर्ड कर रहे हैं. एक राइट तो गया, तो there must be some outweighing considerations before the court के, या वो आदमी खुद के कि जी आप मेरा ट्रायल करें, मुझे लोअर कोर्ट पे भरोसा नहीं है. वो तो समझ जाता है, वो अपना राइट, एवरी पर्सन कैन फॉरगो हिज ओन राइट, बट द स्टेट कैन नॉट टेक अवे समवन एल्सेस राइट, कि तुम्हारी जरूरत नहीं है एक राइट की, मैं फैसला करूंगा. मैं अपना राइट फॉरगो कर सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ आप मेरा फैसला कर लें, मुझे नहीं चाहिए अपील. ठीक है, मैं तो कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट द स्टेट. मगर ये किसी ने इस पॉइंट पे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया है. Maybe you can give us some case law on that. Can you take away someone else's right? You can forgo your own right.
But I cannot take away your right. That's, I don't think, किसी ने इस point पे touch नहीं देखिए बड़ा किया. आसान था नाइक साहब कि ये सवाल भी बन सकता था कि could there be conviction without a confirmation, without a reference and a confirmation under 374? A simple question, and one could have answered no. As a consequence, वो सारा unsafe हो गई judgment. इस तरह क्यों नहीं सवाल इस तरह के सर देखिए आपने भी जो लेटर ऑन क्वेश्चन जो बनाए क्वेश्चन जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनाए, क्रिमिनल क्वेश्चन बनाए, नहीं मगर ये अपील की आप जस्टिस जमाल साहब ने जो बात की अपील की, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है. मैं सर बात बड़ी क्लियर देखे ना, राइट ऑफ अपील खत्म हो गया. सेशन तो हमारी बात मैं बोल नहीं रहा कि मंजूर मलिक साहब ने बड़ी क्लियरली बताया कि सेशन ट्रायल होना चाहिए था. जब सेशन ट्रायल होगा तो उसकी राइट ऑफ अपील होगी, कंफर्मेशन होगा, मगर इसमें राइट ऑफ अपील भी खत्म हो गया. एक राइट ऑफ अपील खत्म हो गया ना इसके अंदर. इस पे कोई आप हमें केस लॉ दे ना, कुछ तो करें ना इस पे. सर केस लॉ आपको दे देंगे. हाँ वो करें ना, ये पॉइंट पे चल इस्लाम में इस्लामिक प्रोविजंस पे दे दें कोई केस लॉ. इस्लामिक प्रोविजन और इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ देंगे. क्वेश्चन ये हो सकता था कि क्या मर्डर केस हाई कोर्ट सुन सकता है डायरेक्टली? सर वो नहीं बने ना क्वेश्चन. सुने तो सही ना, तो नहीं बने तो हमें बताएं ना, हम क्या करें, बना लें. अच्छा दूसरा आपने बनाए 8 क्वेश्चन बनाए, ये भी बन जाता. नहीं ऐसे आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि कैन वी चेंज एंड ऑल्टर द क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंट. नंबर टू कैन वी से द क्वेश्चन कुड हैव बीन कि जी ये जो कंफर्मेशन वाली बात हो गई, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, जो मलिक साहब ने सारा जिक्र किया, सारे क्वेश्चंस थे, ये इस पे जनरल हमारी फाइंडिंग आ जाए तो जजमेंट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन 1 पढ़ा जाए, उसके अंदर कवर हो जाएगा. ये जो आप बात कर रहे हैं ना माय लॉर्ड, क्वेश्चन 1 कवर हो सकता है. जी क्वेश्चन 1, लेट्स रीड क्वेश्चन 1 सर. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4. 4 के अंदर ये कवर हो जाएगा सर जो आप बात कर रहे हैं. सब आर्टिकल्स 1 and 2A, आर्टिकल 8, 9, आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 14 प्रोसेस था 10A था भी नहीं सर, खाली ड्यू प्रोसेस देखने 10A तो नहीं था, ड्यू प्रोसेस तो था ना सर, ड्यू प्रोसेस था. दिस इज द आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक. देखिए अगर इसको हम वजाहत से कर देते ना तो थोड़ा बेहतर होता. आप यस बाय इम्प्लीकेशन यू कैन से हैं कवर्ड, मगर जो वैसे माय लॉर्ड जस्टिस शाह ने बात की है कि वो अगर हो जाता है आसानी हो जाती है. वो क्लियरली क्वेश्चंस नहीं बनाए गए इसमें. थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ठीक करना बिल्कुल आई एम फॉर इट, नो मैटर व्हेन इट हैपेंस. Our problem, my thinking for myself is, can we do it in this particular case in the kind of questions sent? And secondly, the question is by the discretion of the president, who must have examined the public importance and then framed a question. It's the president, matlab is the highest office. Definitely. I say, okay, आपने तो चलो सवाल A पूछा है, वो तो गलत है, मैं नए सवाल बनाता हूँ. एक्चुअली सवाल पूछना क्या चाहिए था तुम्हें, ये हम कर सकते हैं. मेरी खाली आपसे अर्ज ये होगी कि ये What is your answer to can a presidential reference the questions as sent, can they be redrafted? ये बताएं. नहीं आप अपना ओपिनियन ना दे, कुछ रेफरेंस. Case law is against you on this one. सर मैं ये नहीं कह रहा आप रीड्राफ्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ये आंसर दे सकते हैं. आप बताएं ना, कोई जजमेंट पढ़े ना. सर आप कहते हैं रीड्राफ्ट नहीं कर सकते. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है. रेफरेंस टू एनी टेक्स्ट बुक, लीगल प्रेसिडेंट, कुछ तो देना पढ़े ना कुछ. आप ये तो हम भी कह सकते हैं. weight of judgment is against you. Judgments are the reference का क्वेश्चन प्रेसिडेंट का चेंज नहीं हो सकता. आप बता दें हमें. सर हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, हम सवाल. सर देखें, 2 जज फॉरेन जुरिसडिक्शन से रिट ऑफ क्या कहते हैं कोरम नोबिस की बात की थी. एक कैनेडियन कनाडा के अंदर भी इसी तरह की पावर है और कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया था. अगर पावर है तो बात खत्म हो गई ना. कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया था बाय द कोर्ट. देखें दुनिया में केसेस हैं, बर्मिंघम 6 का केस है, मटन का केस है. उनकी अपनी अपनी तरीकाकार है ना. किसी जगह लेजिस्लेशन है, किसी जगह कॉमन लॉ ने जुरिसडिक्शन ले ली है, तरीकाकार है. आपसे सिर्फ इतना सवाल. कनाडा के अंदर एग्जैक्टली लाइक दिस है. अगर आप इजाजत दें तो कनाडा का मैं आपको बताऊं. नहीं हमने पढ़ लिया है, आपसे पूछा. आप ऐसा करें मेरे ख्याल में. जी. अब आपको पता चल गया है. एक फर्स्टली पहली बात यह कि क्या सदर साहब के दिए गए सवालात में तरमीम हो सकती है. पहला बात आप हमें इस पे नोट दे दीजिए. ठीक. दूसरी बात हमने आपसे पूछा है राइट ऑफ, अगर एक अपील चली जाए किसी
मुल्जिम की उसका वो लिया जा सकता है या वो खुद राइट ऑफ फॉरगो कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात जो ऑलरेडी सवाल में रिकॉर्डेड है कि इस्लामी तालीमात के मद्देनजर ये हम इसको कैसे इस फैसले को देखेंगे, बिलखसूस अप्रूवर का रोल कि भाई मैं आपको कहता हूँ आप फलां को जाके कत्ल कर दो, आप तो बच गए, मुझे सजा हो गई। ये मतलब ये आप हमें पॉइंट्स दे दीजिए। ठीक, दे देते। आई नो आप शायद नहीं है, मगर हम आपको वक्त दे देंगे कि आप हमें लिख के दे दें। I'll give it in. अगर हम आप आगे थोड़ा बढ़े, किसी और से सवालात करें, तो फिर अगर आपके जहन में कोई और बात आती नहीं, बस that's it. आपने जो क्वेश्चंस हो सकता है आपके जहन में और बेहतर बात एक चीज और मैं उसी के अंदर जो नोट दूंगा, उसके अंदर जो ऐड करना होगा ऐड करके आपको दे देंगे, राइटिंग में आ जाएगा। ये जो आपने जिन वीडियोस का रेफरेंस देना चाहते हैं, प्लीज आप उनका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको दे के जो क्वेश्चंस आप समझते हैं कि ये रेलेवेंट हैं, उनको आप हाईलाइट कर दें कि जी दीज आर द इश्यूज, दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आई वांट टू रिलाई अपॉन। ओके सर, ठीक है, ठीक है तो सर। वो आपके इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दैट हमारे सामने होंगे, हम वो ट्रांसक्रिप्ट में देख लेंगे कि कौन सी चीज हमें आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, दैट विल बी डन। ठीक है, थैंक यू सर। चलें, अब नेक्स्ट जाहिद साहब हो गए, ये हो गए, रह कौन गए? इत्तेजाज साहब रह गए। नहीं, रजा रजवानी साहब आप किसके लिए? ये भी माइकस। Are you Michaels or you? No, sir. I'm representing Miss Sanam Bhutto and the two. Farooq Saab, who did you represent? Farooq was representing Bilawal Bhutto. तो आप you want to finish? You also, अगर आप ही you want to add something? Yes, my lord. I would be adding. Do you want to go first or shall इत्तेजाज साहब पहले करें? आपस में आप लोग फैसला कर लें, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। इत्तेजाज साहब कर लें। ठीक, आइए इत्तेजाज साहब। My lords, we have identified the documents. मिल गए आपको? They have been flagged. Excellent, my lord. Very good. Thank you. But we need that write up which we said. My lord, will be given. ठीक है, take your time, लेकिन कर दें। Thank you for all your assistance. Wonderful. We may we proceed back to Lahore, my lords. Well, ठीक है, no problem. Thank you. Islamabad is a good city. Spend the night. My lord, we have a case. Great one. एक सेकंड, डोंट गो, एक सेकंड ठहरिए। One was the application. नहीं, एक तो ये हो गया, दूसरा किधर है? इसकी मुझे फोटो कॉपी कर दें जितने जजेस हैं। हाँ, सबको बल्कि थोड़ी 2-4 और भी करवा लें कि बाकी वकीलों को भी दे दें। एक तो ये हो गई। This is the application which was yes. But maybe for the council's benefit, 5-6 pages. उसमें एक लगा हुआ था ना, ये खत्म की जरूरत है। उसमें एक लगा हुआ। आप ऐसे करें कि दोनों चीजें अलग अलग तरतीब से, हाँ, कुछ जरा 10-15 सेट बना दीजिए, ठीक है? This is the complete statement. ठीक है। No, for the benefit of council and for us also. Thank you for your assistance once again. My lord, I just wanted to confirm one thing, that would you be winding it up tomorrow, or would you be convening tomorrow? तो नहीं जाएगा। Tomorrow we are here. We have a lot of work. We are here. The night is young. Okay. Or the evening is young. Okay. No, unless, like I said, then take on the burden of this case never finishing on your shoulders. If you're prepared to make that statement, we will give you all the time in the world. Ittizaz sahab. Who do you represent? I'm a guy. Acha, any new points? With your considerable vast experience, we would like to hear some new points. New point. Although I've submitted in writing my submissions also. Which one? CMA number? Yes, sir. CMA नहीं लगी. Oh, wonderful. हाँ. इसमें मैं इस पे नंबर भी लगवा लीजिएगा, हाँ? ये अभी ये दे रहे हैं आप? अभी दे रहा हूँ. अच्छा, ये सबके इतने सेट्स हैं? आ गए सारे. Do you want us to go through this? I'll take you through this and fast. Thank you very much. But I will. Just if you can just go take us through it. जी. मैं पहले तो अर्ज करना चाहूँगा this paralysis we have everybody. Not just a judicial paralysis, but a paralysis that we don't have any paralysis here. That we cannot revise or go into a judgment
that has been attained finality. ये finality का जो issue हमारे पे हमें paralyze कर देता है. It doesn't let us work on that. ठीक. If you look at एक चीज मैं पहले जरा अर्ज कर दूं ये फॉर दी रिकॉर्ड. आपने 5 सवालों पे हमने बात कर दी है. आपको किस वक्त है. मैं एक चीज अर्ज कर दूं. And I want to say that loud and clear. I am not prepared to answer question number 4. Question number 4. We're not asking you. I am not prepared to answer. I want to go on record. Because, सर ये जो है इससे तो मैं डरता हूँ इस सवाल को जवाब देने से. इस्लामिक लॉ वाला. हाँ. अच्छा. छोड़ दीजिए. इसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया और किसी को नापसंद हुआ वो जवाब. इतने फिरके इतने यहाँ तो मैं तो मारा गया मुफ्त में. I पता नहीं है हर एक चीज में this has to be brought in. और इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल के शेर है, and I've had to use these verses in the National Assembly, in public gatherings many times, क्योंकि कोई बात कह दो तो कोई ना कोई उठ के कहता जी ये तुम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो. भाई एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरी. वो इस्लाम का उससे ये अब फॉर्मली पूछ रहे हैं. ये देखें कि whether the decision in the case of murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirements of Islamic laws as codified by the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance, especially mentioned in the following surahs of the Holy Quran, Surah Al-Nisa, Surah Al-Baqarah. Any point बताइए ना. अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ये आपके सवाल पे इन पे बहस करते हुए मैं कोई इस्लामिक आप तो जिस पे करना चाहते हैं वो कर लें. हमारे हम कोई जबर तो नहीं, आप जो मर्जी करें आप छोड़ दीजिए. वो अल्लामा इकबाल ने कहा जी वायदों में वो तकब्बुर के इलाही चौबा. दिस इज अल्लामा इकबाल. मैं सिर्फ इसमें ये करके छोड़. वायदों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा. अपनी हर बात को आवाज खुदा कहते हैं. बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत जाती. बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत जाती. दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं. और तेरे बंदों का जो ये हाल है शाफायात, मेरे जैसे को तो क्या जानिए क्या कहते हैं. So I am not going to. नहीं, आप इतना तो कह सकते हैं कि ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल को रेफर कर दें क्वेश्चन. हाँ ये मैं कह रहा हूँ. ठीक. अच्छा सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 186 को जरा देख लें. जी 186 ये अगर आप मेरी ये किताब देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इतना कुछ जो कि मलिक साहब के पेपर में पॉइंट्स हुए थे वो मेरी सारी बहस खा गए. दिस इज ऑल प्रिपेयर्ड वॉल्यूम्स नंबर 9, 8 ये सब कुछ हमने भी जुनैरा और कैसर ने किया है. आई डोंट टेक क्रेडिट ऑफ दैट बट दिस वाज अ पेंसटेकिंग सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स. सर ये जो है पेज आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 186. लेट अस ये आपने रिप्रोड्यूस किया हुआ है जी 1 पे. जी ये मैं इसी में से जाता हूँ पढ़ता ही जाता हूँ. आई डोंट वो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आर्टिकल 1. जिस कंपनी में जिस ऑरा में और गैलेक्सी में ये आता है आर्टिकल 186 उस आर्टिकल उसके में ये आर्टिकल्स हैं 184, 185, 186 से 187. इनमें क्या फर्क है और आर्टिकल 186 क्यों डिस्टिंक्टिव है. आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा इसमें है कि मे पास एन ऑर्डर ऑफ द नेचर ऑफ आर्टिकल 199. दैट इज द नेचर. अब वो फंडामेंटल राइट्स की भी कंडीशन है और पब्लिक इंटरेस्ट की भी है. But basically of the nature in 199. 185 में may hear and determine the appeals from other decisions in the High Court.
ये 185 की बेसिक चीज है, अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट. अब 186 को अभी मैं छोड़ रहा हूँ. 186 says the Supreme Court may, if it considers expedient to do so in the interest of justice, transfer any case, appeal or other proceeding pending before any high court or any other high court. The compulsive use of the word any really widens this actually. Then 187, subject to clause 2 of article 175, the Supreme Court shall have the power to issue such direction, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice. And any such direction in number 2, order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall, where it is to be executed in a province or a territory or in the area of forming part of the province, but within the jurisdiction of the High Court of the province, be executed if it has been issued by the High Court. Then, sir, 188 is the Supreme Court shall have the power, subject to the provisions of any act and of any rules made by the Supreme Court, to review any judgment pronounced or any order made by it. This I pause. This itself is a power that your lordships have. It is to be exercised under the rules, no doubt, but it is a power that you have even in this case. And I will come to that a little later, but then 189, any decision of the Supreme Court shall, to the extent of it decides the question of law, or if based upon the or enunciates the principle of law, be binding on all other courts of Pakistan. अब इसमें इस फैमिली में 186 को आप एग्जामिन करें, एंड आई फोकस ऑन 186. सर आपकी इजाजत है. जो कुछ आपने पढ़ा है वो तो ऑलमोस्ट आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं और पेनल्टी आ गई. अब उसको दोबारा उसको पढ़ने का तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि 188 में क्या लिखा है, 189 में क्या लिखा है, 187 में क्या लिखा है. यू हैव एग्जॉस्टेड द रिव्यू, वो खत्म हो गया. अब रह गया 186 पीछे रह गया. आइए सीधा 186 को देखें, ये बड़ा दिलचस्प है. 186, if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court or any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question to be so referred and report its opinion on the question to the President. Now, in this, we have judgments which clearly say that it cannot be sent back unanswered. The questions have to be answered, even if your lordship's answer, this is not a question of law. I think one point which you missed, if you look at clause 1 and clause 2, the clause 1, the restriction is on the President, what he considers to be a question of law. But it doesn't say the Supreme Court will consider only questions of law. It says the Supreme Court shall consider a question so referred. Now that is the opinion of the President. Even if it's a pure factual question, I think we have to consider it. I don't know. Maybe that could be one interpretation and give your opinion. Or we could say that this is not a question of law. You could, of course, say that. Answer हमें वो उनकी सवाबदीद है. अब उसका प्रेसिडेंट खुद मुख्ता है या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना है, वो एक अलग क्वेश्चन है. अब दूसरी बात, एक बहुत ऑपरेटिव पॉइंट किसी ने नहीं बताया. इफ द प्रेसिडेंट, आप जरा देखिए ना सामने, आपको पॉइंट समझ आएगा जब आप
जरा देखें, if the president, it could have said, if at any time, इन 3 लफ्जों का मतलब क्या है जी, if the president क्यों नहीं लिखा है, पेज नंबर 3 if at any time क्यों लिखा है, जी, तो that means के पुरानी बातें भी आ सकती हैं सामने. हाँ, वो आ नहीं तो emphasize हुआ है ना, otherwise you can convey the very same meaning by the words if the president. Why say if at any time the president? So either these words are redundant or they give No. Any is a word that expands the categorization. It is unlimited. अब part 2 में नहीं लिखा है Supreme Court shall consider a question of law so referred. Shall consider a question so referred. The referred can only be a question of law. Shall consider a question so referred. Sir, so अब referred. वो प्रेसिडेंट के जहन में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हमारे नजदीक ये क्वेश्चन ऑफ, सपोज इस केस की नहीं बात करें, हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता ही नहीं है, हम उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे. सर ये जो सवाल उसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है सर, मैं इसे अर्ज करूं, अगर हर हालत में हमें कुछ ना कुछ लिख के भेजना है बट वो जो ये जब इस तरह का होता है, सो रिफर्ड फॉर इंस्टेंस, इट अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर एंटिटी or concept that has preceded something that has But preceded. can we, Abhilika, that is desirable. Was it desirable? Can we go into that? Is for the I don't think we can go into desirability. That is for the president to decide if it is desirable or not. And I don't think it is justiciable. Exactly. I don't think it is justiciable. Yeah, I agree with you. जी. Unless वो Cameron जैसा. इंतजार साहब देखिए, इसी में ही the president on any question of law which he considers of public importance. So the president must sit down, think, apply his mind, and think that this particular question is of public importance. मतलब ऐसा तो नहीं ना उन्होंने भेज दिया कोई सवाल, उन्होंने पहले सोचा कि सवाल क्या है और public importance का है, तो इसलिए बात हो रही थी कि आप for instance, आपकी जो बात है ना justiciable है या नहीं, suppose it is not of public importance. Can we say we not answer it because it's not of public importance? I think we still have to answer it. That's, I don't know, my tentative view on the matter. As far as the public importance is concerned, that is the domain of the president. The court cannot enter the domain of the president's discretion when it considers whether it is of public importance or not. Yes, the case law which has developed is whether it is a question of law or not. But a point has been raised by the worthy Chief Justice in which he talks about subarticle 2 saying the question so referred. It's not question of law so referred. So this has to be looked into. नहीं सर, अगर पहले यही सवाल एक सेकंड में ऐड कर दूं, उसको लिमिट कर दिया है. इंतजार साहब इसमें जरा मैं ऐड कर दूं जो जस्टिस याया ने कहा कि देखें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस है ना कि हम प्रेसिडेंट की चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकते. उन्होंने एक ओपिनियन बनाया है कि मेरे ख्याल में ये सवाल है क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये उनके मुताबिक है ना कि हम उसमें नहीं जा सकते, तो हम फिर किसी चीज में नहीं जा सकते, हम सिर्फ इसमें जाएंगे कि ये सवाल है, इसका जवाब क्या है. हम इसमें भी नहीं जाएंगे कि अच्छा आपने पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल तो ये सोचा है लेकिन हमारा ख्याल है कि सवाल यूं होना चाहिए था, ये तो हम नहीं कर सकते. नहीं है, और इसमें सर जब so referred है, so it will be referred. Are you saying the word so means that it becomes justiciable that the question is of public importance, number one? Is it justiciable that it's a question of law? Is it justiciable that the president desire was properly exercised? Then we make all these things justiciable. If you are saying so referred implies all these things in it. No sir, I'm not saying that. I'm not saying that because when it's the constitution or any legislation or you and I in general conversation say that this was so referred and it refers to an entity which has been identified as a question of law in the previous, because the so referred has to come after something that is being referred and has already come. Correct. Now, so it will be to the law point. It won't. The numbers. You're saying it will be the law point. Clause 2 will not expand the category. हमारे यहाँ मैं एक चीज अर्ज करूँ सर, ग्रामर में मुझे बड़े हम वो कहते हैं लिखते लिखते उसमें, and for instance for such एक जगह आपने कहा है कि 100 bags of wheat
were going on a truck and the truck crashed with such wheat. अब वो सच का यहाँ सच की जगह इट कर दें, आप उसकी जगह ये बड़ा सिंपल था, पर हमारे एक वकूला में सच का बड़ा जिक्र आता है और एक वकालत में इस किस्म के एक दो अल्फाज हैं विच ग्रामेटिकली डोंट अपीयर नेसेसरी. बट अब सर इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, इसमें अब 4 चीजें इस 166 में 186 ये हमने कवर कर ली 4 चीजें. सर मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा किसी, मैंने तो आपको किताब दी है जो वो देखेंगे आधी से ज्यादा वो मलिक साहब वाली वो पैराज नंबर्स और वो भी सारे निकाले हुए जो हैं वॉल्यूम्स हैं. एंड आई वाज फीलिंग सॉरी नॉट फॉर माय सेल्फ बट फॉर माय. ये एतजाज साहब इसका एक जवाब दे दीजिए मिस्टर एतजाज. जी सर. ये सुनिएगा, ये सब आर्टिकल 2 के अंदर ये वही बात है जो 186 में भी हो रही है. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. So, after considering the question, can we answer that these are not the question of law? Yes. Hey, of course, if it is not question of law, then your lordships have to advise the President that these are not within the purview of his jurisdiction or his authority to seek an opinion on anything other than on points of law. And I will, in challenging, contesting the decision, the judgment of in Mr. Bhutto's case, I will be avoiding going into any statement, any piece of evidence. I won't even go. Nor we can reframe the questions. No. Reframing the questions में you will have. Reframing the question में आपकी अथॉरिटी कुछ होगी. वो 186 में कहाँ है सर? मैं उसमें जजमेंट्स हैं, इसमें ये जो वो गवर्नर जनरल नहीं इसमें अगर सब्सटेंस वही है वो आप उसकी अंग्रेजी में थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है. देयर कैन बी यू कैन रीड्राफ्ट. सर इसमें ह्यूजली डिफरेंट ह्यूजली ये रेफरेंस जो हुई सवाल जो were you consulted when this reference came? Which reference है? This one. ये जो आपको क्वेश्चन आए. No, I am not. So who was Babar Rawan साहब. Where is he? Babar Rawan was the lawyer for the referring authority, and then he the brief was taken away from him and was given to me. That was a bit late in the day. In fact, I inquired, and the Attorney General, learned Attorney General, said he was going to appear for the referring authority. So I reverted back to my amici position. There is an order by your lordships appointing me amicus, and I has not been withdrawn. So I'm here to serve your lordship. Milord, ये बड़ी उसमें जो गवर्नर जनरल रेफरेंस थी यही इसमें आया कि क्या चेंज कितना कर सकते हैं. उसमें चेंज किए उन्होंने क्वेश्चन. उसमें कौन सी प्रोविजन के नीचे आया था ये सर? ये 56 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 213,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 213 213 है जी इशफाक. और ये reported as, of course, as your lordships know, you wear your law on the sleeves. ये has a PLD 1955 Federal Court 213. Oh, sorry, 435. 213 to section 435. इसमें इन्होंने ये किया था, जो क्वेश्चन था
जी क्वेश्चन नंबर 3 था और आपको याद होगा कि तमीजुद्दीन साहब वाली नेशनल असेंबली on grounds that it had not formulated a constitution was dissolved by the Governor General. Tamizuddin Saab challenged that Sindh High Court restored the. इसमें क्या क्वेश्चन क्या था? ये सर इसमें ये क्वेश्चन था, ये पढ़ देना. ये whether the Constituent Assembly page sir 449. 449. जी सर. Whether ये पैरा subsequently नीचे है, subsequently as suggested in the course of the court's order. ये सर the questions originally referred to were, ये दरमियान में इस पेज पे है 449 के दरमियान में, the last line है paragraph की. The questions originally referred were, what are the powers and responsibilities of the Governor General in respect of the government? आपने चेंज किए थे क्वेश्चंस, वो कहाँ हैं? वो सर ये इसी में आ रहा है ना, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन ही देख लें, दूसरे को पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, पढ़ेगा. What are the powers and responsibilities of the Governor General in respect to the government of the country before the new Constituent Convention passes the necessary legislation? इसको इन्होंने चेंज किया. Subsequently, as suggested in the course of the court's order dated 18th April 1955, the following further questions were also referred for opinion. भिजवाएंगे यहाँ नहीं बनाए. जी सर, वो दो और आ गए. Whether the Constituent Assembly was rightly dissolved by the Governor General. ये उन्होंने भेजे. जी सर, उन्होंने भेजे. हाँ उन्होंने भेजे. हाँ तो हम नहीं सर, नहीं आपने किया. मैं कोर्ट में सजेस्ट किया पर आप शायद अभी कुछ और सवाल बनाना इसमें आपने चेंज किया. ये जरा देखिए. दूसरा डिफरेंस ये भी है ना, ये कि एग्जीक्यूटिव एक्शन पे ओपिनियन लिया जा रहा है. एक तरफ हम ओपिनियन ले रहे हैं एक डिसीजन पे ऑफ द कोर्ट. प्लीज कीप दैट डिस्टिंक्शन. सर I will show your lordship maybe. अच्छा, इसमें ये जो वो ये इन्होंने किया ये था कि ये जो लफ्ज राइटली है, was it rightly dissolved, इसको इस केस में the court took it and answered it as was it legally and lawfully dissolved rather than rightly. Okay. ये सब्स्टिट्यूट किया. ये मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक निकालें. इम्प्लाइड ना भी करते तो उसमें इम्प्लाइड राइटली डिसॉल्व होगा, लॉ के मुताबिक डिसॉल्व हुआ. डिस्ट्रिक्ट को जो मॉडिफाई हुआ वो भी तो कोर्ट ने तो मॉडिफाई नहीं किया. नहीं, वो कह रहे हैं अभी आगे पढ़ रहे हैं कि ये वाला जो राइटली वाले की जगह लॉफुल कर दिया. जी वो दे लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली. लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वो किधर क्या है? अगर पेज 521 पे जाएं तो वो तो वही रखा है, whether the Constituent Assembly was rightly dissolved by the Governor General. They discussed it as legally. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है. आपने प्लेसेटम आई पढ़े? जी सर. प्लेसेटम आई पेज 461. साहब अगर आप वो रिकॉर्डिंग वाले रेफरेंस पे अगर आप देखें, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोर्ट ने अपने लिए इश्यूज बनाए. हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, सम इश्यूज वर फ्रेम्ड. उस इश्यूज को डिसाइड करते हुए हर क्वेश्चन के जवाब आता गया.
जी जी वो इस तरह तो आप कह सकते हैं कि बजाय इसके कि नए क्वेश्चन बनाए उसको रिजॉल्व, उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए पॉइंट समझ लें, इश्यूज समझ लें, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, इस तरह की उस अगर आप वो तो अगर आप जिस फॉर्मेट में भी उसको कर रहे हैं, यू हैव योर लॉर्डशिप हैव द अथॉरिटी, जवाब क्वेश्चन से ही देना उसी क्वेश्चन का होगा। जी जी। बैरिस्टर साहब, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता था तो वो क्या हो सकता था? अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड था कि इसमें होता तो वो क्या होता? क्या मुनासिब क्वेश्चन ऑफ लॉ, मुनासिब नहीं यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें तो मुनासिब क्वेश्चन थे बुनियादी तौर पे कि असेंबली That is in the first question that covers that. किस तरह? क्यों नहीं, वो कवर करते हैं पहला क्वेश्चन। सर अब इसमें आप एक मुलायजा करेंगे, आई जस्ट गेट दैट आउट, आई डोंट नो व्हाई एस्केप सर। अब ये रीफ्रेज क्वेश्चन के तहत इसको लिया गया। अब इसमें एक दिलचस्प चीज आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको रिक्वेस्ट की थी कि प्लेसेटम आई पढ़ लें। आई जो है पेज 461 वो इसमें जुरिस्डिक्शन को वो किया हुआ है एक्सप्लेन। सॉरी आई 461 reference under we cannot on this reference undertake this inquiry or record any findings on the disputed questions of fact, because any such course would cover us into a fact-finding tribunal, which is not the function of this court when its advice is asked on certain questions of law. The answer to the legal question always depends on facts found or assumed, and since we cannot try issues of fact, the reference has to be answered on the assumption of fact on which it has been made. The Privy Council also has, under Section 4 of the Act of 1833, similar advisory jurisdiction, but no precedent from that similar advisory jurisdiction, but no precedent from that board or from the federal court has been shown to us where a reference was ever made to ascertain a legal position after a trial of facts by the advisory court. We consider that there is nothing improper or peculiar about the manner in which the reference has been made. The Governor General has merely asked us to report to him what the legal position is if those facts are true. Mr. Itizaz Ehsan, you have placed us, or probably yourself, on the horns of a dilemma. You say that the Zulfikar Ali Bhutto case is bad law, should not be cited. And to support your contention, you reply upon the Maulvi Tamizuddin Khan case. It's a bit ironic. No, it's a bit ironic. This is unless you say this is good law. I am not relying on Maulvi Tamizuddin case. This is the Governor General's reference. वही डिसोल्यूशन की बात हो रही है। डिसोल्यूशन की बात हो रही है, पर मैं गवर्नर पॉइंट तो वही है। नहीं सर, पॉइंट बिल्कुल नहीं है वो। क्यों? ये तो मुनीर साहब की जजमेंट है। हाँ, तो वही भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन का सवाल है, इसमें आपको दिखा देते हैं। नहीं, हम कॉर्नेलियस अगर जरा आप देख लीजिए ना, ये आप हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो मैं आई एम नॉट। नहीं, देखते हैं आपकी बात शायद सही हो, हम गलत हो क्या। इस डिसोल्यूशन को तो यानी इसमें ये बात शायद रजा रब्बानी साहब, अगर disputed facts हैं भी, we have to take the facts as they have been sent by the president as admitted facts. So we can't question the facts narrated in the reference itself. मैं अगर आपसे ये राय पूछता हूँ या मशवरा लेता हूँ, which is related to a Toyota car
तो आप उसको तो फैक्ट समझेंगे कि इसके पास 1986 मॉडल टोयोटा कार है जो चल रही है और उसके साथ ये बेचना चाहता है। आप यू विल नॉट बी गिविंग मी एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू। बड़ा सिंपल सवाल है, इस सारी चीज को एक सवाल में बना सकते हैं हम। क्या ये सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा कि प्रेसिडेंट ये कहता है कि भुट्टो's ट्रायल, ये जो जजमेंट है ये मिस ट्रायल, बस सिर्फ यही सवाल पूछ लेते, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता, क्योंकि फैक्ट्स वुड ऑल बी एक्सेप्टेड। इसको डिटरमिन करने के लिए हमें वो सारा एविडेंस देखना पड़ता एज एन एपेलेट फोरम, और फिर हम फैसला करते कि ये इन्होंने गलत डिसाइड किया। तो ये तो एक्सरसाइज नहीं ना इसमें एनविजिज्ड। नहीं, इसमें इस वक्त इन्वेजिज नहीं है। इस वक्त मैं बात कर रहे हैं। I am trying to, and I will avoid all getting into appreciation of evidence. My learned friend was, and नहीं, वो तो हमने कर लिया है बाहर। ठीक है, ठीक। अब आप नए पॉइंट्स बताएं। मैं आपसे I will not tread on that territory. Mr. Itzadastan, if we can take a short break now, or you want to finish soon, we don't want to push you, but we want that today you finish. Short break now, पर अगर कल पे ही रख रहे हैं तो नहीं, कल नहीं हो सकता है। चलो, आज ही होना है। मैं हाजिर हूँ। मैं not. Unless you're taking a few minutes, we'll wait. If you're going to take more than few minutes. No, I'm going to take more than that. I'm going to take more. So we'll take a short 10. मतलब हम घर बता दें ना कि आप इधर ही हैं आपके पास। सर बता ही दे। बता ही दे, कुछ बातें हैं अभी करने वाली। आप घर बता रहे हैं या शाह साहब बता रहे हैं घर? अपने घरों में। मेरी बेगम तो मायूस ही रहती है, इंतजार ही करती रहती है। We'll take 15 minutes, we'll come back and take your time.